वहीं मैं अभी सो के उठा हूँ। हालत थोड़ी मेरी बुरी है, मगर उसका रीज़न ये है कि मैं इस्तांबुल में रह के और यहाँ पढ़ के तंग आ चुका हूँ। तो मैंने उठते ही टिकट बुक करवाई है, कुछ सीन ऑन करते हैं, थोड़ा फ्रेश एयर मिले। क्या ख्याल है? आज पहला दिन है रोम में और कल रात को मैं कुछ लोगों से मिला था, जिसमें एक रशियन लड़की थी, एक कैलिफोर्निया से एक बंदा था। तो वो सुबह सुबह तो निकल गए हॉस्टल से मिलेंगे, फिर वो जहाँ भी लेके जाएंगे घूमे फिरेंगे उनके साथ ही, देखते हैं क्या सीन बनता है। Hey, so she's my friend and we'll be like, what are we doing now? We're gonna find Some place to eat. Let's eat some pizza first. Mario, Luigi, mozzarella, triple cazzo. Bam. That is all my Italian. Alright. So what did you order? So, What? actually I ordered the pizza because we are in Rome, Italy, and it's like gonna be a crime not to eat the pizza in Italy. So we just had a nice lunch over here, and now we are gonna go to check out some churches in Rome. No, firstly, Pantheon. You want to go to Pantheon, right? Yes, you're gonna go to what? Pantheon. Pantheon. So the place right now I am at is Pantheon, और ये जो है 12 BC में बना था, और इसका असल जो मकसद था वो ये था कि मार्स और दूसरे जो सितारे हैं उनको यहाँ लोग आके वर्शिप करते थे। लेकिन फिर ये जो है ये ओरिजिनल कंडीशन में नहीं है, इसको रीबिल्ड किया गया था इन AD like 12 AD, और फिर करते करते इसको चर्च बना दिया गया है। एंड इट्स ब्यूटीफुल, अमेजिंग प्लेस टू बी। We couldn't go in because there's a long queue, but there's this legend that if you put your hand inside that mouth and you're telling the lie, it's gonna cut your hand. That's all. And everyone over here in the queue just here to take picture of it. So behind me, it's a very iconic building, Colosseum, where gladiators used to fight. I just got a tour, but I didn't understand shit what he was saying. Short people in front. Magar, it's worth it. Like going there, going inside, taking a tour. I think it's all worth it. So you guys come visit. Let's move. Let's move. Behind me is Piazza Venezia, or this is the place where the first dictator of Italy used to give his speeches to the public gathering. And it's a museum back in there, and it's kind of nice. The building, it's beautiful. The architecture is amazing. So you guys should come here and do visit this, and especially go on the top. उधर लेफ्ट है पीछे, लेफ्ट से आप ऊपर जाते हो, 10 यूरो की उसकी टिकट है, and you get to see like a panoramic view of Rome. भाई मेरे पीछे है सेंट पीटर बेसिलिका, और ये रेनेसांस के पीरियड में जो है बना था, और apparently it's like one of the largest basilica in the world. It hosts almost 20,000 people at the same time. Next level.
ओवरव्यू हुआ मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा यूँ कि आई एंडेड अप बाइंग साइट सीइंग बस टूर्स. I hope you guys enjoyed my video on drone. और अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस पर आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि क्या चीज़ें मुझे अपनी वीडियो में सही करनी चाहिए और क्या नहीं, ताकि आई कैन ग्रो एज अ एडिटर एंड वीडियोग्राफर. दैट वुड बी ग्रेट. माय नेक्स्ट वीडियो इज़ ऑन फ्लोरेंस और I hope you will enjoy that too. So stay tuned to my channel. Subscribe, like, whatever. Or see you in my next video. Peace.